सालाबादप्रमाणे यंदाही नारळी पौर्णिमेनिमित्त सिद्धेश्वर पेठेतील श्री मार्कंडे मंदिरात श्री ज्ञानेश्वर सामुदायिक पारायणाचे आयोजन केले असून दररोज भक्तिमय वातावरणात ज्ञानेश्वरी पारायण सुरू आहे। पारायणास बसणाऱ्या भक्तांना येथे ग्रंथ पुरवण्यात येते। अत्यंत धार्मिक वातावरणात तेलुगुमुखी मराठी ज्ञानेश्वरी पारायण संपन्न होते। संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली दररोज भक्तांसाठी भोजन प्रसाद यांची व्यवस्था होते। श्री मार्कंडे दिंडी संस्थेच्या वतीने पारायणाचे नियोजन केले जाते। याविषयी अधिक माहिती स्वरांजली न्यूज चॅनलला देण्यात आली। ती संस्था आम्हाला सहकार्य करतात त्याबद्दल त्यांचा आभार आणि धन्यवाद आहे। सगळ्या समाजाने आपल्या या उत्सवात सहभागी होऊन आणि श्रवणाचा लाभ घ्यावा, कारण हा श्रावण मास आहे। श्रावण मासात श्रवण घडावं आणि आपला समाज फक्त वर्षालाच नाही दरवर्षी सेवा असते आणि या सेवेला आपण आवर्जून यावं, रोज मार्कंड्याचं दर्शन घ्यावं, रोज त्यांचं नाव घ्यावं। पारायण करत असताना आपला भाव हा पूर्णपणे आपल्या ग्रंथामध्ये असल्या म्हणजे आपल्याला फळ मिळेल। जर भाव न देता आपण इकडे तिकडे लक्ष दिलो तर आपण किती जरी वाचलो तरी त्याचं फळ आपल्याला मिळणार नाही। म्हणून एकच इच्छा आहे की आपण सर्वांनी अगदी मन लावून आपलं संपूर्ण भाव त्यात उतरवून अगदी प्रेमानं वात्सल्यानं आणि आदरानं तेवढ्याच आर्ततेनं आपण वाचन केलं पाहिजे। రోజు పొద్దుగాల సప్తగా నాస్తా ఇస్తాము। ఏమి నాస్తా అంటే పూరి బజీ సుశీల పోయే మళ్ళా వడపావ్ మిసల్ పావ్ ఇవన్నీ నాస్టాకి ఇస్తాం। మాఘవారి నడుచుకుంటూ పోతాము। 500 మంది తొవ్వలో ఉంటారు, పండరపురంలో 2000 మంది ఉంటారు। ఆషాఢ వారి కార్తీక వారికి ఆడపిల్ల సప్తా చేస్తాము। ఆడ 150 మందికి వంట మేమే చేస్తాము। నేను ఉపాధ్యక్ష ఉండికి మా రాము కుండ్లీగడు కోనే కోట రాము పట్టుకొని ఇదంతా చేస్తాం మేము। ఇంత మాది వినండి।